Very warm morning to one and all present here. This is Abhilsha from Layal Public School, and I am your social science teacher. So, students, today we all are going to continue our chapter number 7 from your history textbook, and the name of the chapter is Civilizing the Native, Educating the Nation. In our previous class, we discussed about education, English education, how English education enslaved us. We have gone through the point of view of Mahatma Gandhi. We talked about modern education, what happened after modern education, new routines, new rules, and report of William Adams, what William Adams thought about the ancient studies of India. Okay, we talked about all these things. Now, our today's topic under the agenda of national education, we have to do Tagore's Board of Peace. Tagore's Board of Peace, page number 9090. Okay. So now, yes. First of all, what is the meaning of a board? A board means house, okay, place where we live. Okay, Tagore's A Board of Peace. A Board of Peace. You all have heard the school opened by Rabindranath Tagore, that is known as Shanti Niketan. So a Board of Peace is used here for Shanti Niketan. ठीक है, शांति मतलब पीस मतलब हिंदी में पीस को हिंदी में शांति बोलते हैं. बोर्ड मीन्स प्लेस, और निकेतन इज a term, Hindi term which we use for a place or a house. Okay, so many of you have heard of Shantiniketan. Do you know why it was established and by whom? So Rabindranath Tagore started the institution in 1901. As a child, Tagore hated going to school. He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing. So while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. Tagore felt that childhood ought to be a time of self-learning, outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. Teachers had to be imaginative, understand the child, and help the child develop her curiosity. According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. Okay, so now Rabindranath Tagore highly disliked the four walls of his classroom, wherein students looked like prisoners. ठीक है, जहाँ पे बच्चों को एकदम prisoners की तरह ट्रीट किया जाता था. बिल्कुल नहीं पसंद थी उनको, जो चार दीवारी में जो ये क्लासेस होती है वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी. So when he grew up, he dreamt setting up a school where children were not bound to sit in classes or study a particular curriculum, कि एक पर्टिकुलर करिकुलम पढ़ रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर क्लासरूम में वो बैठे हुए हैं, बट रेदर ही प्रिफर्ड अ क्रिएटिव एंड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए. ठीक है, बहुत उनके जो खुद के स्कूलिंग डेज थे वो काफी सफोकेटिंग से लगते थे, ऑप्रेसिव से लगते थे. दैट्स व्हाई ही ड्रीम्ड ऑफ दैट प्लेस, दैट स्कूल वेयर चाइल्ड कैन बी फ्री, child can be creative, child can learn from his or her natural experiences, and he wanted the teachers to be loving and caring and solve the anxiety of स्टूडेंट्स. ठीक है, ऐसा नहीं चाहते थे कि जो टीचर्स हैं वो जस्ट जो करिकुलम में है उस चीज को बताते जाए, वो ही पढ़ाते जाए. वो चाहते थे
टीचर्स भी क्या हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, इमेजिनेटिव हो और लविंग हो, केयरिंग हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, टीचर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है, मतलब टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए एक एंजाइटी ना हो, ठीक है, डर ना हो, रेदर दे कैन लर्न फ्रॉम देम। ओके, वो ऐसा एक स्कूल चाहते थे। So with this, Tagore felt that childhood ought to be a time of self learning, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। जो बोलते हैं ना कि इसी सीट पे बैठना है, यही करिकुलम फॉलो करना है, यही यूनिफॉर्म पहन के आनी, ये सिस्टम बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस जो थी ये बिल्कुल नहीं पसंद था। और उन्होंने कहा, Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. So he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. He saw it as an abode of peace, that term Shantiniketan, where living in harmony with nature, children could cultivate their natural creativity. So with this views in mind, Tagore set up his school called Shanti Niketan, 100 kilometers away from Calcutta, present day Calcutta. And Tagore believed that that one's mother tongue should be the medium of instruction. मदर टंग जो है इंस्ट्रक्शंस के जो है इंस्ट्रक्शन का मीडियम होना चाहिए, एंड चाइल्ड जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है सीखे, ठीक है। और चिल्ड्रन अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी कब डेवलप कर सकता है, जब वो नेचर के बीच में, नेचर में रहेगा, सराउंडिंग्स में रहेगा। So, in many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. There were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. अब देखिए, महात्मा गांधी जो थे बिल्कुल क्रिटिक थे, कि बहुत ज्यादा क्रिटिक थे वेस्टर्न एजुकेशन को लेके, मशीनरीज को लेके काफी क्रिटिसाइज किया करते थे। बट वही जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने बोला जो अच्छी चीजें हैं, वी शुड अडॉप्ट दीज मॉडर्न थिंग्स, बट हमें उसको क्या करना है, वी शुड कंबाइन दोज एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद द इंडियन ट्रेडिशन. So he emphasized the need to teach science and technology in Shanti Niketan along with art, music and dance. की साइंस और टेक्नोलॉजी भी जो है वो पढ़ानी चाहिए, साथ में आर्ट, डांस, कल्चर, म्यूजिक, ये सब जो आप पढ़ा रहे हो वो तो होना ही चाहिए, बट साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी को भी क्या करना चाहिए, emphasize करना चाहिए. So many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider section of people. Others urged that alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. Even today also, like what is national education? The debate about the national education is still happening. Okay, so many individuals, many philosophers, many thinkers, they are thinking about this type of curriculum. They are thinking कि एक national education system कैसा होना चाहिए. Some wanted, some of our philosophers, thinkers, national leaders wanted कि जो British का सिस्टम है उसी में थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए. कुछ चाहते थे कि इसमें जो है ये वाला जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देना चाहिए. कुछ लोग चाहते थे कि हमारा जो कल्चर है वही एक ट्रूली नेशनलिज्म है, ट्रूली हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रू कल्चर है, हमारा जो ट्रू नेशनल एजुकेशन है वो हमारा कल्चर है. ठीक है. सो नाउ इवन टुडे आल्सो ये जो व्हाट इज दिस नेशनल एजुकेशन, व्हाट इज ट्रूली नेशनल, ये वाला जो डिबेट है आज के टाइम पे भी चल रहा है. नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल इन कोयम्बटूर, अर्ली 20th century.
By the mid 19th century, schools for girls were being set up by Christian missionaries and Indian reforms organization. ठीक है, अब देखिए 19th century तक जो है आपके मिड 19th सेंचुरी तक क्रिश्चियन मिशनरीज और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप कर दी थी। और ये जो पिक्चर है इसमें कैसे बच्चे कोयम्बटूर, ठीक है, साउथ इंडिया में कोयम्बटूर में कैसे बच्चे खेल रहे हैं एक मिशनरी स्कूल में, उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। Okay, now elsewhere, education as a civilizing mission. Until the introduction of the Education Act in 1870, there was no widespread education for the population as a whole for most of the 19th century. Child labor being widely prevalent, poor children could not be sent to school for their earning was critical for the survival of the family. The number of schools was also limited to those run by the church or set up by wealthy individuals. We have seen in the report of William Adam कि जो schools थी, कितने schools थी, 20 लाख स्कूल थी, बट हर एक स्कूल में 1 लाख स्कूल थी और हर एक स्कूल में ओनली 20 स्टूडेंट्स ही थे। तो नॉर्मली जो वेल्दी इंडिविजुअल्स थे उन्हीं के बच्चे जो हैं या रिच पीपल के बच्चे ही जो है स्कूल जा सकते थे। सो इट वाज ओनली आफ्टर ये जो एजुकेशन एक्ट आया था उसके बाद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वहां उनके पास एजुकेशन जो है स्प्रेड हो सकी। It was only after the coming into the force of Education Act that schools were opened by the government and compulsory schooling was introduced. उसके Education Act के बाद compulsory schooling जो है introduce किया गया था। One of the most important educational thinker of the period was Thomas Arnold, who became the headmaster of the private school Rugby, favoring a secondary school curriculum which had a detailed study of the Greek and Roman classics written 2000 years earlier. He said, "It has always seemed to me one of the great advantage of the course of study generally pursued in our English schools, that it draws our mind so continually to dwell upon the past. Every day we are engaged in studying the languages, the history and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago." So what he felt that a study of the classics disciplines the mind. हम अलग अलग जो है लैंग्वेजेस इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग लैंग्वेजेस को परस्यू कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम अपने थॉट्स को क्या कर रहे हैं एंड द थॉट्स ऑफ मैन, ठीक है, जो आज से हजारों साल पहले जो लोगों की थिंकिंग थी उन चीजों को पढ़ रहे हैं। सो ये क्लासिक्स के जो स्टडीज हैं इट डिसिप्लिन द माइंड। इनफैक्ट मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द टाइम बिलीव दैट सच अ डिसिप्लिन वाज नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज यंग पीपल वर नेचुरली सैवेज एंड नीडेड टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, यंग पीपल वर नेचुरली क्या थे, काफी वाइल्ड होते हैं, काफी, तो उनको कंट्रोल में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो टू बिकम सिविलाइज्ड एडल्ट्स दे नीडेड टू बी अंडरस्टैंड सोसाइटीज नोशंस ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग। कि अगर अब एडल्ट बनना है या फिर जो अगर आपको एक सिविलाइज्ड बनना है, ठीक है, हाईली सिविलाइज्ड एडल्ट बनना है, तो वी शुड नो कि सोसाइटी के जो आइडियाज हैं राइट और रॉन्ग के, उसे समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर क्या होना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड्स वाज मेंट टू गाइड देम ऑन दिस पाथ। ठीक है, एजुकेशन, रियल एजुकेशन जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, हमारे माइंड को डिसिप्लिन में। अब डिसिप्लिन में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें यही करना है, हमें यही करना है, यही करना है, नहीं। तो वी should create our mind like कि we have some aims। ठीक है, मतलब कि अब for take an example, एक एग्जाम्पल लो जहाँ पे we have to take care of our body। ठीक है, तो we have to be disciplined in our eating habits। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया, जब मन में आया, जो दिखा हम खाते जा रहे हैं। We are not savage, we are not wild ना। तो एक प्रॉपर टाइमिंग है, वी हैव, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम लंच कर रहे हैं, हम डिनर कर रहे हैं, बीच में स्नैक्स लेते हैं, कि प्रॉपर टाइमिंग होती है। ठीक है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू बी हेल्दी। तो ये क्या है, ये एक डिसिप्लिन है। ठीक है, वी हैव टू डिसिप्लिन आवर माइंड्स वाज मेंट टू गाइड देम ऑन दिस पाथ, कि हम एक प्रॉपर जो सोसाइटी में रहना है, हमें सोसाइटी में के जो आइडियाज हैं उस चीज को जो है आर्नोल्ड ने यहाँ पे बताया है कि क्यों जरूरी है जो ये
एंशियंट स्टडीज थी, जो ग्रीक स्टडीज जहाँ पे करवाते थे, रोमन क्लासिक्स जहाँ पे पढ़ाते थे, क्यों जरूरी है? So now can you suggest how such ideas might have influenced thinking about education of the poor in England and about the natives in the colonies? Now this is your homework. You have to find out how, you have to फाइंड आउट कि जो नेटिव्स थे, ठीक है, एजुकेशन ऑफ द पुअर इन इंग्लैंड एंड द नेटिव्स इन द कॉलोनीज, कैसे जो ये अलग अलग फिलोसफर्स आए, उनकी थिंकिंग में कैसे चेंजेस आए थे। तो कैन इफ यू कैन सजेस्ट, just do tell me in my next class. Okay, so this is all about today. Thank you so much for joining the class everywhere. Everyone take care. Bye bye.